Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about the survey research, about the questionnaire, about the types of question in the questionnaire in detail. सबसे पहले जो है सर्वे रिसर्च जो है ये होता क्या है? So a survey research has been defined as a system for collecting information from or about people to describe, compare, or explain their knowledge, attitude, and behavior. To explain their perception, explain their beliefs. So they all the research used for such purpose is known as the survey research. More specifically, the survey research relies on the self-reporting information uh, from the participants rather than on observation or opinion taken by the researcher. जिस तरह हम आरसीटी हमने डिस्कस किया था कि आरसीटी में रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और ट्रीटमेंट से पहले भी असेस करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी असेस करते हैं एंड सम टाइम हम मल्टीपल असेसमेंट करते हैं इन द मिड ऑफ द ट्रीटमेंट तो या जो है कोहर्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं लाइक जो एक्सपोज होता है और जो नॉन एक्सपोज होता है हम दोनों को एक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर असेस करते हैं कि इधर उनमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे हैव द डिजीज जो हमने स्टार्ट में स्टेट किया होगा कि हम किस डिजीज स्टडी कर रहे हैं सो इन दोनों केसेस में देयर इज ऑब्जर्वेशन एंड देयर इज मेजरमेंट बाय द रिसर्चर्स इसी तरह जो है इसकी बरक्स बिल्कुल अपोजिट है द सर्वे रिसर्च जहाँ पे न हम ऑब्जर्व करते हैं न हम कैलकुलेट करते हैं मेजर करते हैं बल्कि हम क्वेश्चन करेंगे एंड पार्टिसिपेंट खुद अपने बारे में आंसर दे खुद अपने बारे में हमें डेटा देगा सो एक्चुअली सर्वे रिसर्च जो है ये टोटली दैट रिलाइज ऑन द सेल्फ रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट This self-report information could be collected with survey methods और ये मुख्तलिफ methods जो हैं यूज़ की जा सकती हैं in that self-reported information हासिल करने के लिए ये हम वन टू वन या फेस टू फेस इंटरव्यू में कर सकते हैं by administrating a questionnaire over the telephone आप मोबाइल उस पर कॉल कर सकते हैं और इसे क्वेश्चन करेंगे and he or she will जस्ट आंसर दोस क्वेश्चन एंड आप उसको नोट करेंगे या जो है आप इंटरनेट जो गूगल फॉर्म वगैरह है या गूगल डॉक उस पर आप एक क्वेश्चनेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर एक लिंक किसी को भेजते हैं और लिंक ओपन करते हैं और पूरा क्वेश्चनेयर और फिल करके फिर आपकी तरफ भेजेगा या आप किसी को ईमेल कर सकते हैं ईमेल में आपने क्वेश्चनेयर अटैच किया है वो क्वेश्चनेयर डाउनलोड करके फिल करके फिर री अटैच करके न्यू ईमेल में आपकी तरफ उसको रिसेंड कर देता है तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम पार्टिसिपेंट से उनकी जो रिपोर्ट है उनकी जो डेटा है ये हम ले सकते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं जिसको आइटम्स भी कहा जा सकता है सो द टाइप्स ऑफ आइटम क्या है या द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है सो ब्रॉडेस्ट जो क्लासिफिकेशन है क्वेश्चंस की आइटम्स की दैट इज द ओपन फॉर्मेट वर्सेस द क्लोज फॉर्मेट आइटम्स आर ओपन ended question or the close ended question भी उसको कहा जा सकता है although several standard items format exist the format of interview and questionnaire items is limited only by the creativity of the researcher यानी वो जिस तरह चाहे उस तरह की क्वेश्चन बना सकते हैं open format items that permit a flexible response because वहाँ पे options नहीं होती and the researchers ask a question now they have time 2-3 minutes और उसमें उसकी जो जितनी भी जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर जिस तरह आंसर दे सकता है ये अपनी मर्जी से वहाँ पे आंसर दे सकता है interviews frequently include open format items that allow for the greater breadth of the response. That is a major advantage of using the interview in the survey research. For example, an open format interview question might be, what about your job is satisfying to you? Respondent would be
free to structure their responses as desired. Closed format items that restrict the range of possible responses. Mailed questionnaires, highly structured interviews may use the closed format responses. In such a case, the interview becomes an orally administered questionnaire and the breadth of the response characteristic of most of interview format is lost. सो नाउ क्लोज फॉर्मेट की अगर हम बात कर लें जो ज़्यादातर जो सर्वे रिसर्च में क्वेश्चन यूज होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं और फिर क्लोज एंडेड की भी फर्दर जो है टाइप्स होते हैं लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द लाइक टाइप क्वेश्चन एंड द सेमेंटिक डिफरेंशियल क्वेश्चन अब मल्टीपल चॉइस जो है यू आर ऑलरेडी नोन टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट कैन बी यूज्ड टू मेजर नॉलेज बिहेवियर ओपिनियंस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक बिलीव्स परसेप्शंस ideas and some researchers design closed format items that allow some flexibility of response by including other and permitting respondent to write in a response of their choice. Suppose यहाँ पे 5 या 6 options already mentioned है but the participant think that I don't have any of the option in these stated 5 or 6 responses. I have something else in my mind. So others में लिख देंगे और others में वो फिर इसको explain करेगा कि what is that specifically point which is not in the list and it is in my mind. तो वहाँ पे लिख सकता है. The multiple choice question is known as the stem of the question and the possible responses they are known as the response option. इसमें से एक कीवर्ड होगा जो करेक्ट आंसर होगा वो कीवर्ड होगा अगर ये नॉलेज आप असेस करते हैं और अगर इसमें से बाकी जो है डिस्ट्रैक्टर्स होंगे जो गलत ऑप्शन है या अगर आप उसकी नॉलेज असेस नहीं करते बल्कि जनरल बिलीफ देखते हैं उनके परसेप्शन देखते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक उनकी अपनी राय जो है ये देखना चाहते हैं तो फिर ये तमाम के तमाम जो है उसके लिए ठीक हो सकते हैं बिकॉज दिस इज देयर ओन चॉइस इधर द ए बी सी डी यू किसी को भी टिक कर सकते हैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं so this is actually a research example of the research survey with the item multiple choice are the closed end question. How often do you conduct surveys? This is weekly, monthly, quarterly, and annually. And if there is other options, so because this is a screenshot from the Google Doc, so वहाँ पर अगर आप 5 option add कर सकते हैं, so you can add and add other. So that will be the questions which will be shown, which will be on display for the participant. That will be how often do you conduct surveys weekly, monthly, quarterly, and annually. Laker type questions जो है these are used to assess the strength of response. The most typical set of responses include strongly agree, disagree, and strongly disagree. Sometimes there is a middle option भी होता है neutral or I don't know. Which mean either न मैं इसके साथ agree करता हूँ न disagree करता हूँ. I am the neutral, so there is a mid option as well. Many other are also available and few of which are very important to very unimportant, strongly encourage to strongly discourage, definitely yes to definitely no. Suppose these are the questions. I feel good about my work on the job. Yes, I agree, strongly agree. So he will take the 4. I agree 3. I disagree 2, and I strongly disagree. There is 1. Similarly, the participant will read each question, and then we will he or she will just give the tick to the strength of that response. Either he is agree or disagree. If he agrees, then it is agree or strongly agree, and if he or she disagrees, so either it is the simply disagree or there is strongly disagreement with that question. The third type is the semantic differential items, and it consists of adjective pairs that represent different ends of a continuum. Semantic differential can be used to measure opinions, attitude, and values. और यहाँ पर 2 पोल होंगी 2 अपोजिट पोल्स होंगी यानी मीन सपोज यहाँ पे गुड तो इसका अपोजिट है बैड
इट इज द वीक, तो इसका अपोजिट स्ट्रांग। इस तरह एक्टिव के लिए पैसिव, वेट के लिए ड्राई, कोल्ड के लिए हार्ड, मीनिंगफुल मीनिंगलेस, फ्रेश के लिए स्टेल, ब्राइट के लिए डार्क, ब्रेव के लिए कोल्डली, एंड ब्यूटीफुल के लिए अगली। तो ये दो पोल्स होते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द न्यूट्रल व्हेन समवन इज एक पोल की तरफ है न इस पोल की तरफ है, तो यहाँ जीरो पे जो है टिक लगाएगा। और अगर वो सपोज एक उसको गुड कह रहा है, सो आप गुड जो है दिस इज उसकी फिर आप कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ है, दिस इज 1 2 3, 3 मीन इट्स टू गुड, एंड टू गुड, टू जो है इसमें उससे मतलब 3 से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी, और 1 पर जो है सबसे कम स्ट्रेंथ इसकी होगी। जबकि दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह होगा कि 1 मीन लेस बैड, 2 मीन दैट इज समहाउ बैड, एंड 3 मीन द वेरी बैड। इसी तरह स्ट्रांग वीक हर एक का, फिर ये एक इस तरह हम एक स्केच बनाते हैं विच मीन हाउ, if it is on the one pole, if he or she is on the other pole, there is a mixed zigzag pathway. So that is such type of questions item. They are known as the semantic differential question or items. This is another example. Here we can see the two poles: attractive, unattractive, not valuable, valuable, irrelevant, relevant, unsatisfying, satisfying, slow and fast, rigid, intuitive, डिफिकल्ट, इजी, एंड सो ऑन। सो ये जो है ये फिर यहाँ पे अगेन दिस इज द न्यूट्रल, एंड 1 2 3 is on this toward this pole, and 5 6 7 are for this pole, and these are the two different measurements. That was the at the baseline, and that is the proposed. So it mean multiple times अगर आप इनसे ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आप स्केच बनाएंगे, और फिर हम ये भी देख सकते हैं इससे कि आया टाइम गुजरने के साथ उनकी इस स्केच में उनकी जो ओपिनियन है, उनकी जो वैल्यूज है, ये शिफ्ट उसमें आया है या नहीं आया है। This is another example about the party, the characteristic of a political party. So that is the good, kind, pleasant, fair, clean, positive, and wise. And the X mean that they have click on the good, they have click on the kind, they have click on the one. Similarly, so ye is these all are the semantic differential question. This is another example. Of sample size and sampling, one task common to all survey is the sampling process. चाहे इंटरव्यू से डेटा लिया जा रहा है, 1 to 1 इंटरव्यू से, या मोबाइल कॉल से डेटा लिया जा रहा है, ईमेल पे भेजा गया है, या जो है इंटरनेट लिंक जो है उन पे भेजा गया है, और डजंट मैटर उसमें किस टाइप की क्वेश्चन थी, लाइक इट क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थी, या सिमेट्रिक डिफरेंशियल था। regardless of all these characteristics, each and every survey जो है उसके लिए जरूरी चीज क्या है, the calculation of the sample size। दो चीजें जरूरी हैं कि एक तो चलो जैसे पार्टिसिपेंट आप रिक्रूट करते हैं, सो कौन सी टेक्निक यूज होगी, इधर इट विल बी द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, और फिर कितने लोग जो है दैट विल बी इनफ कि वो अपने टारगेट पॉपुलेशन की से रिप्रेजेंटेटिव बने। तो इसके लिए फिर वी हैव टू कैलकुलेट द सैंपल साइज। तो सबसे पहले जो है हम अपने पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को ये स्टेट करेंगे कि वो आर आवर टारगेट पॉपुलेशन, दे आर द फिजिकल थेरेपिस्ट, दे आर द प्रोस्थेटिस्ट एंड आर्थोटिस्ट, दे आर द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, दे आर द मेडिकल डॉक्टर्स, दे आर नर्सेस, they are the rehabilitation specialists, they are the undergraduate student, postgraduate student, they are the policemen, the shopkeepers, the teachers, the bankers। यानी कौन होंगी हमारे ये जो टारगेट पॉपुलेशन। सेकंड, हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा इज क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल फिजिकल थेरेपिस्ट who are working in Peshawar, or physical therapists who are members of the PIPTA। इसी तरह अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, या जो है यहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट वर्किंग इन द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, तो इसी तरह जो है ये हम अपना सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये
बनाएंगे. The third step is then how many responded to the survey are desired. It means the calculation of the sample size. And when the sample size is calculated, then it is decided that how they will be recruited. So it means which sampling technique will be used. And when they are hired according to the inclusion exclusion criteria of that research, then the data is being collected and any form which is already it is according to the researcher. That can be a one-to-one interview or the other sources. Mail service compared with the interviews, the email service they cost less and permit a broader sampling frame and larger number of participants. Suppose आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है. दूसरा ये कि यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या पार्टिसिपेंट को आप एक जगह पे बुला लेंगे. दोनों दोनों जो केसेस में जो है देयर विल बी एक कास्ट पे एक्स्ट्रा होगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो टाइम कंज्यूम भी होगा. उसकी बरक्स और कम नंबर जो है कम वक्त बहुत एक महीने में अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कितने डेटा बंदों से डेटा सपोज आप दिन में सिर्फ 10 बंदों से डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के जरिए तो अब आफ्टर 1 मंथ जो है आप 300 से डेटा कलेक्ट कर सकेंगे. इसके बजाय अगर आप आपके पास ईमेल लिस्ट है तो आप वन सिटी के बजाय पूरी कंट्री से पूरी प्रोविंस से लोगों को ईमेल कर सकते हैं और एक ही ईमेल जो है आप थाउजेंड्स आप लोगों को सेंड कर सकते हैं. तो आप जो है कम टाइम में कम कीमत पर बहुत ज्यादा लोगों से आप एंड वैरायटी ऑफ प्लेसेस से जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इन दिस रिगार्ड the mail service they are more and more better than the that interview one. Despite these advantages, mail service may also have some disadvantages. और वो disadvantage क्या क्या है कि unavailability of the appropriate mailing list of the participant. जिन आप सैम्पलिंग फ्रेम को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं कि ऑल द फिजिकल थेरेपिस्ट वर्किंग एनीवेयर इन पाकिस्तान. अब आपने सैम्पलिंग फ्रेम तो ओपन कर दिया बड़ा कर दिया. अब आपके पास तमाम फिजिकल थेरेपिस्ट जो पाकिस्तान के हैं उनकी एक वैसा डेटाबेस है जिससे आपको ये ईमेल मिल सकती हैं. तो सबसे जो मेरे डिसएडवांटेज है वो ये है कि ईमेल लिस्ट जो है ये अनअवेलेबिलिटी. सेकंड इज द लो रिस्पांस रेट. वो ईमेल देखते हैं इसकी कोई क्या श्योरिटी है क्या गारंटी आपके पास है कि वो ईमेल देखने के बाद क्वेश्चनियर को डाउनलोड करेगा उसको फिल करेगा फिर अटैच करेगा फिर रीसेंड करेगा. तो इस ये बहुत कम लोग अक्सर इस तरह करते हैं और इसी तरह हमें इस बात का खतरा होता है कि हमें कम रिस्पॉन्सेज मिलेंगी. सो लो रिस्पॉन्स रेट इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द मेल interviews the mail service. Sorry, the mail service. The third disadvantage of the mail survey is inability to gain information from individual who cannot read or they have lack of control or who actually respond to the questionnaire. आप कोई भी बंदा उस क्वेश्चनियर को फिल कर सकता है और फिर आपको भेज सकता है. आपको ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वाकई वो बंदा है इसने फिल किया है जिसको मैंने ईमेल किया है या जो है कोई और है. एक और डिसएडवांटेज ये भी हो सकती है कि हर जगह भी जो है मैं भी हर एक के पास इंटरनेट फैसिलिटी ना हो तो इसी वजह से जो है ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेज हैं मेल सर्विस के. इंटरनेट सर्विस जो है the widespread availability of the internet has given rise to the phenomena of internet administrated service. If we have the mailing list of them and if we can give them personal message उनको कि kindly जो है आप अपना response हमें जरूर दें. And if the target population is an educated subpopulation, like they are the university teachers, they are the undergraduate students, they are the bankers, so internet service become feasible when a high proportion of the population of interest is likely to have internet access and known email addresses. Advantages to the internet service are they require less time for responses, they eliminate the need of manual data entry, they are convenient for the respondent, they have wide geographic coverage.
Limitation of internet service, if we summarize them, that selection is biased to those with internet access. There may be no email address directory for some population. There may be technological difficulties during the reading and filling the questionnaire, and the service may be seen as intrusive by some internet users. Implementation overview. There are few classic methods of collecting survey data, like we have discussed in the previous slide. It may be the personal interviews, the telephone interviews, the written questionnaires, and the survey data through the internet. This is actually the comparison between the personal interviews, the telephone interviews, and the mail questionnaires and the mail service, and the internet questionnaires are the internet सर्विस. अगर टाइम की बात की जाए तो सबसे जो पर्सनल इंटरव्यूज obviously they are very consuming time consuming process. On the other hand, mail questionnaire, internet questionnaires, they both are consuming less time, so they are time efficient. While telephone interviews, they also consume time. Like the personal interviews, the difference is just the interview is on the mobile phone and call, and here it is one to one on the table. Otherwise, both are the time consuming. Cost की बात की जाए so personal interviews, person to conduct interviews, the clerical or the data entry, personal and travels, इसकी कास्ट बहुत ज्यादा आती है इन चीजों पर. Similarly, personal to conduct interviews और clerical or data entry person long distance telephone, तो obviously उसका खर्चा भी आ जाएगा. On the other hand, यहाँ पे जो कास्ट आएगा उस पे क्लरिकल और डेटा एंट्री पर्सनल का होगा, एंड प्रिंटिंग एंड मेलिंग एंड इंटरनेट एंड ईमेल इसी सर्वे सॉफ्टवेयर. सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर खर्चा बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू दीज टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड द टेलीफोन इंटरव्यूज. जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जहाँ पर मेल क्वेश्चनेयर है या इंटरनेट क्वेश्चनेयर है, it can cover the broad geographic distribution. On the other hand, the personal interviews that greatly limited unless very well funded. If you have a huge रिसोर्स, आपके पास फंड ज्यादा है, तो फिर आप किसी को हायर भी कर सकते हैं, टीम बढ़ा सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं. तो इससे आप जो टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस है वो आप हल कर सकते हैं, और कास्ट वैसी आपकी पास तो ग्रांट ज्यादा होगी, तो फिर जो है ये आप यहाँ पे कर सकते हैं ये पर्सनल इंटरव्यूज. somewhat limited by long distance telephone cost. Obviously suppose आप आउटसाइड द कंट्री अगर कर रहे हैं, या आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं, so obviously they may have some cost. And broad geographic distribution, first because mailing can reach long distance at low cost, and very broad geographic distribution first because of quick worldwide internet availability. Depth of response की अगर बात कर ले, so there can be extensive, somewhat limited, limited and limited. ये एक disadvantage है यहाँ का मेल क्वेश्चनेयर एंड इंटरनेट क्वेश्चनेयर का, कि रिस्पांस यहाँ पे कम आ जाता है, और हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप जो है हमें अपना रिस्पांस दे दें. जबकि आप वन टू वन इंटरव्यू जब लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप उनसे क्वेश्चन करते हो, उसी टाइम आपको आंसर भी मिलते हैं, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ रिस्पांस थोड़ा सा एक्सटेंसिव होता है. समवट लिमिटेड मीन वहां पर भी आप फोन कॉल रिसीव होती है नहीं होती, फिर रिसीव होता है तो आपको और रिक्वायर्ड डेटा जो है मिल जाती है या नहीं, तो दैट्स व्हाई समवट लिमिटेड. अगर हम इसमें बात कर ले कि एनोनिमिटी की बात कर ले, सो डिफिकल्ट टू अचीव, यहाँ डिफिकल्ट टू अचीव एंड इजीली अचीव और इजीली अचीव. एंड लिटरेसी ऑफ रेस्पोंडेंट कैन सैंपल दोज अनेबल टू रीड राइट, हम इसमें कर सकते हैं. एंड सेम हियर for the telephone interviews, respondent must be able to read and write in दोनों के लिए. तो ये दोनों तकरीबन almost एक जैसे हैं, the mail questionnaire and the internet questionnaire, while the telephone interviews or the first interviews, they are almost similar. Ability to clarify question इन दोनों में possible है, यहाँ पे थोड़ा सा difficult हो जाता है respondent के लिए. जो स्कीजुलिंग है, दैट इज मस्ट कोऑर्डिनेट रिसर्चर्स एंड रिस्पोंडेंट स्कीजुल्स इन दोनों के साथ, दोनों के लिए जो दोनों के लिए अगर टाइम जो है ये एग्री हो तो फिर ये हो सकता है. एंड सेम
फॉर द टेलीफोन इंटरव्यूज, जबकि ये दोनों जो है ये कन्वीनियंस जो रिस्पोंडेंट वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और रात को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, व्हेन दे आर ड्यूटी, व्हेन दे आर ऑफ ड्यूटी। तो ये जो है एनी टाइम जो है ये कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इसका ये एडवांटेज हासिल है मेल क्वेश्चनियर को एंड इंटरनेट क्वेश्चनियर को। डेटा एंट्री जो है बाय रिसर्चर और असिस्टेंट, बाय रिसर्चर असिस्टेंट, जबकि यहाँ पे इंटरनेट क्वेश्चन अमूमन जो है ये सिर्फ होते हैं तो ऑटो ये ऐड हो जाते हैं। सो ये तकरीबन जो है दिस, सो दिस वाज ऑल डिफरेंस बिटवीन advantages and disadvantages of the interviews and questionnaire. Interviews can be personal interviews or the telephone interviews, and questionnaire can be mail questionnaire or the internet questionnaire. Thank you so much to all of you.